Hello everyone. Today we will be discussing about the types of loading and different types of beams and what are the supports and what are the types of supports. So first of all, when we are discussing about the loading, you must understand there are four types of loading. One is point load, in which we also called it as concentrated load. So when we are talking about point load, it is denoted by, suppose this is a beam and there is one single concentrated load is here, suppose of 10 Newton for I am talking about. Okay, so there's that where we are talking. This is the point load which is acting at the beam. Okay, so when you are talking about the uniformly distributed load, uniformly distributed when it is distributed, suppose this is the span and in this span equal magnitude is of load is distributed throughout the span, such as it is given 5 kilonewton per meter. So that per meter 5 kilonewton load is acting. So that type of loading is known as uniformly distributed load. And when you are talking about the uniformly varying load, that means it is varying uniformly. Suppose this is increasing uniformly, that type of load is known as uniformly distributed load. Okay, so one is rolling loads. Rolling loads, you must understand that suppose the vehicle is moving on a bridge or on a road, so that type of load will be rolling loads, which will be produced by its tires on the road. Okay. So now this is the point load example. Okay, unit can be Newton, kilonewton, etc. of this load. Load acting at a definite point on the beam is known as a concentrated load or a point load. So this is the diagram showing the beam which is supported from both the ends is having a concentrated load. Okay, so unit load is also known as concentrated load. Okay, so this is the diagram showing the uniformly distributed load. As I have also drawn in the diagram that suppose this is the beam and in that beam this uniformly distributed load is acting. So you can also show this like this, that okay, you can make a triangle and show the arrows here. So this type of loading is known as uniformly distributed load, and it is measured in intensity with units Newton per meter, that how much load is distributed across the span at what meter, that it is given by per meter. Okay, so uniformly distributed load is denoted by UDL or rectangular loading, you can say. A load which is spread over beam in such a manner that each unit length is loaded to the same intensity is known as uniformly distributed load. So I hope you guys have got this concept of concentrated load and UDL load. So this is uniformly varying load, or you can say UVL. Okay, or triangular loading. Triangular loading because this is varying triangularly. It is increasing this when you are talking about this diagram. In this uniformly load is distributed. This is varying. This is increasing at some rate. Okay, uniformly varying. And if this must be like this, so that will not be a uniformly varying load because it is not uniform in nature. Okay, that is varying load and it is increasing and then it is decreasing at the same rate. So that type of loading is known as uniformly varying load. Now comes the rolling loads. Rolling loads are those loads which roll over the given structure. So I have told you the example. Suppose in the bridges, a car is moving or a bus is moving. In that cases, that type of loading is known as rolling loads, in which the you can say the load which roll over the given structure. So bridge is an structure, so load is rolling over it, the tires are rolling over the bridge. So in this type of loading, magnitude of bending moment and shear force will go on changing the position of load. So different position पे उसका magnitude और direction क्या होगा, change होता रहेगा. एग्जाम्पल क्या है, अ ट्रेन ऑन द रेलवे ट्रैक, व्हीकल ऑन द ब्रिजेस, ये सब मैं आपको बता दूं. सो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की बात है. सिंपल सपोर्ट क्या हुआ, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट. सिंपल सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो ये डायग्राम देखिए, आप इसको सिंपली
ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, एक ट्रायंगल बनाया और ये एक सिंपल लोड. When a beam is rests freely on a support, then such a support is known as simple or simply support. Okay. So in this type of support, the beam is allowed to rest freely on the support. So जो ये beam है, ये freely support में है. So that type simple support. रोलर सपोर्ट की बात करें, रोलर सपोर्ट की अगर हम एक ट्रायंगल बनाना है, उसके नीचे दो रोलर लगाने, ओके. या तो आप सिंपली इसको एक ऐसे रोलर बना के ऐसे दिखा सकते. सो ये ऐसे भी करेक्ट है और ऐसे भी. So you can say the roller support, when the beam end is supported on a roller, then such support is known as roller support. Roller supports are free to rotate and translate along the surface upon which the roller rests. So the surface can be horizontal, vertical or sloped at any angle. ये जो लोडिंग सपोर्ट है, ये कुछ ऐसे इंक्लाइंड भी लगा सकते हैं आप. सो इसमें जो रिएक्शन होगा वो आपका ओनली एक ही रिएक्शन होता है, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन. इसमें एक ही रिएक्शन होगा, दैट इज ओनली वर्टिकल. हिंज सपोर्ट की बात करें तो हिंज सपोर्ट में देखिए, ये सपोर्ट के साथ यहाँ पर एक हिंज हुआ है. तो हिंज सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसको ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है. इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. दैट वन इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वन इज वर्टिकल रिएक्शन. ओके. सो अ हिंज सपोर्ट इज अ सपोर्ट व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द बीम. तो यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0. यहाँ पे मूवमेंट नहीं होने देता है. So direction, but it will allow the beam to rotate about the support such like a door. यहाँ पे तीसरा मोमेंट की वैल्यू क्या है? 0 है. बट ये क्या करेगा? इसको रोटेट अलाउ कर सकता है, क्योंकि बीम पे जब लोडिंग होगी तो क्या होगी? बैंड होगी. सपोज यहाँ पे अगर मैं एक ये डायग्राम बनाता हूँ और इस पे लोडिंग है, तो ये बीम कुछ यहाँ पे अगर सपोर्टेड है, ओके, सो ये क्या कुछ इस तरह से बैंड होगी, तो यहाँ पे क्या है? रोटेशन आ जाती है. तो रोटेशन आ सकती है, बट मोमेंट क्या होगा? 0 होगा. A hinge beam support can resist both vertical and horizontal forces but not a moment. Fixed support जिसमें कोई मूवमेंट, ये क्या करेगा? मूवमेंट नहीं होने देगा. वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और मूवमेंट. जैसे आपकी विंडो के नीचे आपने स्लैब देखी होगी, तो क्या होता है? वो फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पे, तो वो फिक्स्ड है वहाँ पे. सो दैट इज फिक्स सपोर्ट कैन रेजिस्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स एज वेल एज मोमेंट. सो वो रेजिस्ट करता है तीनों को, हॉरिजॉन्टल को भी, वर्टिकल को भी और मोमेंट. सिंस दे रिस्ट्रेन बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, देयर आर नोन एज रिजिड सपोर्ट. तो इनको रिजिड सपोर्ट्स भी बोला जाता है. और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है? 0. क्योंकि जब यहाँ पे अगर सपोज लोडिंग होगी तो ये कुछ इस तरह से बैंड होगा कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. Okay, so these are the diagrams. In this roller supports, only vertical reaction is there. In fixed support, there are 3 reactions. In pin support, there are 2 reactions. Simple support, there is 1. Roller, fixed. Okay, so these are the diagrams of the support. So when you are talking about the hinge support, there is one horizontal and one vertical. Moment is 0. Okay. When you are talking about roller, only vertical reaction is there, others are 0. Horizontal and moment is 0. Fixed support, there are 3 reactions. So this is the case of a hinge support, roller support and fixed support. So what is the beam? Any horizontal, देखिए आप अपनी बिल्डिंग में अगर किसी अभी आपके घर में बैठे हुए, तो आपको अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर दिख रहा है जो आपके स्लैब का लोड ले रहा है, दैट इज नोन एज बीम. एनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सफिशिएंटली लॉन्ग, जब हम उसको कंपेयर करेंगे टू इट्स लेटरल डायमेंशन, इतनी लॉन्ग है, देखिए उसका अदर डायमेंशन क्या है? विड्थ, वो क्या है? कितना छोटा है. या डेप्थ की बात कर लो, वो लेटरल डायमेंशन क्या है उसके? उतने बड़े नहीं है एज कंपेयर टू इट्स. तो सपोर्ट एट सर्टेन पॉइंट्स, वो बीम को जो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एंड पे क्या है? वो सपोर्टेड है, सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स. जो स्लैब का लोड है वो उस पे आएगा, किस पे आएगा? बीम्स पे आएगा. जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये बीम्स है और ये स्लैब का लोड इस पे आ रहा है. ओके, सो ये बीम क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है, सफिशिएंटली लॉन्ग है एज कंपेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन. बाकी के डायमेंशन क्या है इसके? उतने बड़े नहीं है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ.
So that type of structure is known as beam. टाइप्स ऑफ बीम कौन कौन सी होती है? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम तब होगी जब वो एक तरफ से हिंज सपोर्ट होगा, दूसरी तरफ से रोलर सपोर्ट होगा, तो इस टाइप की बीम को बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम जब एक तरफ फिक्स सपोर्ट होगा, दूसरा एंड फ्री होगा। फिक्स सपोर्ट, फिक्स बीम फिक्स दोनों तरफ से फिक्स्ड हो गई तो उसको फिक्स बीम बोलेंगे, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम, सपोज ये बीम है यहाँ पर सपोर्टेड है और ये रोलर सपोर्ट है और यहाँ पर देखिए आप ये इधर से ओवरहैंग हो रखी है, तो इसके दो केसेस आ जाते हैं। एक सिंगल ओवरहैंग, ये सिंगल ओवरहैंग भी होगी अगर ये दोनों तरफ से ओवरहैंग हो गई सपोर्ट से, अगर इसकी स्पैन बाहर को जा रही है तो ये ओवरहैंगिंग है, तो ये डबल साइड ओवरहैंग होगी क्योंकि दोनों तरफ से ओवरहैंग। कंटिन्यूअस बीम क्या होगी? कंटिन्यूअस बीम वो बीम होती है जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स होते हैं, ओके, कंटिन्यूअस बीम हो गई। बीम विद वन एंड हिंज एंड द अदर एंड रोलर। अब ये क्या हो गया? ये आपकी हो गई स्पेशल केसेस है आपके जो आपको बीम आइडेंटिफाई। ये क्या है? बीम विद वन एंड हिंज, एक एंड पे हिंज है एंड द अदर एंड पे रोलर, तो ये क्या हो गया? सिंपली सपोर्टेड का केस। पर एक केस आता है जिसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, जिसमें एक तरफ से आपका बीम क्या होता है? फिक्स बीम होता है, दूसरी तरफ उसके एक रोलर लगा होता है, ठीक है, तो उस टाइप की बीम को बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। सिंपली सपोर्टेड बीम देखिए, and both ends of the beam are simply supported, it is called as simply supported. Cantilever beam, if one end of the beam is fixed and the other end of it is free, सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये फिक्स बीम है, दोनों तरफ से देखिए फिक्स है, फिक्स सपोर्ट है। ओवरहैंगिंग में एक तरफ से ओवरहैंग, दोनों तरफ से ओवरहैंग, दोनों केसेस हो सकते हैं, देखिए, ओके। नाउ हम आते हैं बात टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम्स जब हम राइट हैंड से ओवरहेंगे या लेफ्ट हैंड से ओवरहेंगे, बोथ साइड से ओवरहेंगे, इसके केसेस आगे ओवरहेंगे। कंटिन्यूअस बीम देखिए, मोर देन 2 सपोर्ट्स, ये डायग्राम्स हैं। द बीम विद वन एंड हिंज्ड एंड द अदर एंड रोलर, देखिए ये केस। द बीम has one of its end hinged and the other side of the beam is supported below. These kinds of beam are capable of withstanding the load in any direction. Okay, so this is the case of simply supported. Span is the distance between two intermediate support. देखिए span क्या है? अब यहाँ पे ये अगर हम इस पे बीम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये होगा, ये क्या होगा? स्पैन होगा। जब हम यहाँ पे बीम बनाते हैं, जैसे हिंज भी हो गया, ये रोलर हो गया, तो ये जो एल इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर इस सपोर्ट तक, ये हो गया स्पैन। टाइप्स ऑफ स्पैन क्या होती है? क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, टोटल। जब हम क्लियर स्पैन की बात करें तो देखिए, जब ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, कॉलम से कॉलम इंटरमीडिएट डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। जब कॉलम के सेंटर से अगर हम स्पैन लेते हैं उसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर स्पैन, ठीक है। अब यह होती है ओवरऑल स्पैन। तो टोटल स्पैन क्या होगी? ओवरऑल स्पैन। क्लियर स्पैन क्या होगी? इंटरमीडिएट। सेंटर टू सेंटर स्पैन क्या होगी? इफेक्टिव स्पैन। ये देखिए, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। Clear span is the horizontal distance between the two inside surface of the span support. Effective span क्या होगी? Distance between two support is called effective span when we are talking about center to center spacing. Total span is the outer distance between the two support is called effective span. So these are the conditions of different types of support, and when we are talking about the types of beams and what type of loading. Okay, after this we will be doing how when the loading is acting, how to calculate the reaction in those beams. So for that, thank you very much.